Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 3, that is the nature of matter, and the question answers. Let us see. It is a figure of different utensils of different shapes. First one is, it has another shape. All are having the different shape. So you can see here gaseous occupy space. मतलब गैस जो है हमेशा स्पेस घेरती है. तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये बॉटल है, उल्टा करके इसमें एयर बबल्स जो पास हो रहे हैं. So bottle of plastic and rubber tube and the bucket and the water. So it shows to the gaseous occupied the space. यहाँ देखो, यहाँ पे स्पेस जो है खाली हो गया. यहाँ पे गैसेस आ गई हैं काफी. तो एयर यहाँ से पास कर रहे हैं और ये कंटेनर था, इसमें से गैसेस आ रही हैं. यहाँ एक और अदर एग्जांपल है. यहाँ पे 2 बैलून्स है तो इनके वेट बिल्कुल सेम है, सो दोनों बैलेंस है. लेकिन अगर एक में से एयर हम निकाल दें, पंचर कर दें एक को, तो जो है जिसमें एयर ज्यादा है सो वो डाउन में आ जाएगा. मतलब इसमें कुछ न कुछ एयर में वेट होता ही है. सो गैसेस है वेट. सो स्टेट ऑफ बैलेंस आफ्टर एयर रिमूव एंड बैलेंस स्टेट इनिशियल. बोथ बैलून्स आर फिल्ड विद द एयर. Now come to the main points. All things are made up of matter. Matter have weight and occupy space. There are 3 states of matter: solid, liquid, and gases. Solid have a definite shape and they occupy space. Liquid do not have definite shape but they occupy space. Gases do not have definite shape and occupy the entire space. Which is available. Those materials which get dissolved in water are called miscible, while those which cannot dissolve in water are called immiscible in water. So those materials through which we can see clearly are called as transparent. So those through which we cannot see are called opaque, and those through which we can be seen finitely are called translucent. So the material which let the heat passes through them are called good conductor of heat, while those of do not are called bad conductor of heat. So those materials that let the electric current passes through them are called good conductors of electricity, while those that do not pass easily are called poor conductor of electricity. Those materials that are attached towards magnet are called magnetic, while those are not are called non-magnetic material. मतलब magnetic material में क्या हो गया, अगर हम जिस ऑब्जेक्ट के पास में ले जाते हैं मैग्नेट को तो वो अट्रैक्ट अगर हो जाती तो मैग्नेटिक मटेरियल, अगर नहीं होती तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड और गैस टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली विद इन अदर सॉलिड लिक्विड और गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव टर्मिनल. It is serial number, characteristics, solid, liquid and gases. So first one is flow. Do not flow, flow and flow. Second is shape, shape means definite shape, and here changeable and the changeable. Gases changeable होती हैं. Now third one occupy space. Space में देखते हैं क्या है, solid occupy the space और liquid also occupy the space and the gases also occupy the space. Fourth है weight. Have weight and have weight. All are having the weight. They are solid, liquid and gas. Matter has weight and it occupies space. Matter that occupies space and has a definite shape is a solid. Solid do not flow. Matter which has weight and occupies space but does not have a definite shape is a liquid. Liquid flows. Matter which does not occupy a definite space, has no shape but has weight is a gas and gas flow. यहाँ पर आइस है, आइस मेल्ट होकर के वाटर की फॉर्म में आ रही है, फिर से वाटर जो है
फ्रीज होकर के आइस बना रहा है। तो वाटर जो है स्टीम बना ले रही है, हीट अप होकर के, हीट अगर रिमूव कर रहे हैं तो ये फिर से वाटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, अब बर्निंग कैंडल है, बी है एक्सटिंग्स कैंडल, और सी है रेकिनडेटेड। तो ये आपके चारों हैं। तो फिगर जो है चेंज ऑफ स्टेट्स इन अ कैंडल, कैंडल में स्टेट चेंज करके दिखा रहे हैं। Any material which is dissolved in a liquid is called a solute. Liquid in which the solute is dissolved is called the solvent, as solute mixed in a solvent form a solution. Third है, pick up the appropriate word from the list and fill in the brackets. So soluble है, insoluble है, miscible है, immiscible है. So first one is blue. Vital can be dissolved uniformly in water. First, it is soluble in water. So you can write here soluble. Second है, on mixing oil and water, two separate layers are formed as these two liquids are immiscible. You can fill here immiscible. Third, coal is insoluble in water. Fourth is orange juice is miscible in water. It is a wooden stick and it is a metal spoon and hot water is there. So it shows the good and the bad conductor of heat. हीट में क्या होगा, ये वुडन स्टिक जो है ये हीट नहीं हो पाएगी, बट की जो है मेटल स्पून जो है बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा, क्योंकि हॉट वाटर गिव्स द एनर्जी. So it is a cell, it is given as. So इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट है. ये इलेक्ट्रिक वायर है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, और ये कॉइन है जो बीच में लगा रखा है, और मेटल कैप टर्मिनल है यहाँ पे जो प्लस का है आपका, और ये बल्ब लगा दिया है ग्लो करने के लिए, और ये सेल आपने लगा ही लिया है. जैसे इसको टच करके शुरू करते हैं तो मेटल बेस जो है नेगेटिव टर्मिनल है, सो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होने लगती है और ये बल्ब जो है ग्लो हो जाता है. तो बल्ब ऑफ अ टार्च, टार्च के बल्ब को ये मेटलिक इसमें रखें, फिलामेंट है और मेटल बेस है और मेटल ट्रिप है, टर्मिनल्स यहाँ पे ले रखें. चलिए यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर वेयर पास. व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर वेपर, इट इज अ गैसियस स्टेट. सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज इन soluble in water. So insoluble in water, sand है इसमें, soluble नहीं हो पाएगा. सी पार्ट है, which of the following is not magnetic, इसमें से कौन सा मैग्नेटिक नहीं है. So gold is not a magnetic. आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे मैग्नेटिक हो जाएंगे, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएंगे. सी पार्ट है, which of the following is a good conductor of electricity. वुड है, बेकेलाइट है, कॉपर है और प्लास्टिक है. कॉपर इज द आंसर. नाउ ई पार्ट, we can smell perfumes in all corner of a room while the bottle is kept in one corner. This is called. It is called as diffusion. So it is given here. You can put here. Now come to the fill in the blanks. First of all, first one is all matter occupy and has. So space यहाँ रखना है, आपको लिखना है. And has mass. Second one is dry leaves are conductor of electricity. Bad conductor. Bad conductor. इसका कंडक्टर हटा दीजिए थोड़ा सा. Bad conductor of electricity. You can write here. Third one, we can clearly see through a glass. Thus, it is transparent. We can smell a stack of garbage even at a distance because gas is in air.
which gas diffused. Now next one, we wear sweat in winter because air present in between sweat, sweater and cloth is a conductor of electricity. It is bad conductor of electricity, bad conductor of heat as well as electricity. The question first, name three things made from some metal. So you can write your answer, water, ice and vapor are the made of same metal. Next question, classify the following into solid, liquid and gases. So you can write here milk है, chalk, sugar, oxygen, syrup, smoke and glass. तो यहाँ पे solid लिख लिया, liquid लिख लिया और gases लिख लिया. So first of all milk. Milk क्या है आपका? It is a liquid. यहाँ पे लिखा हुआ है chalk है, chalk क्या है? Solid है. So you can write here solid. और sugar क्या है? Sugar भी solid ही है. और ऑक्सीजन क्या है? गैसेस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रख दिया गया. सिरप क्या है? पीने की चीज है, तो सिरप इज हियर. और इसके बाद स्मोक एंड ग्लास. स्मोक कहाँ है? स्मोक आपका स्मोक इज हियर, गैसेस में आ गया. और ग्लास कहाँ है? ग्लास आपका सॉलिड में आ जाएगा. ऐसे आप लोग इस सबको वेरीफाई कर लोगे और करेक्ट कर लोगे. Now come to third question. Name 5 liquids which are used at houses. So first है water, coconut oil, milk, kerosene oil, petrol, pure drinking water. ये सारे हैं इसमें. Fourth है what are the changes that taken place in ice when it is changed to water. So when ice change into water, its molecules move apart, which gases its state and from solid to liquid. Adjust a paper inside a glass in which way that the paper does not fall even if the glass is inverted. Now, inverted things glass and push it is straight down to the bottom of a bucket full of water. Take care that the glass does not tilt. So take the glass and observe if the paper is wet or dry. Give reason for your answer. So you can write your answer. When we put a glass inside the bucket filled with water, we can fill the paper in dry. It means that inside the glass air is filled. When we put the glass inverted inside the bucket filled with water, then water does not enter the glass as air is fitted inside. So the glass, because air occupies space, hence the paper inside the glass is dry. Name one transparent solid and one such liquid. दोनों का पता करना. तो पहले ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं. ट्रांसपेरेंट मतलब सॉलिड हो गया, ये ग्लासेस पे है. और ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्या है? वाटर की फॉर्म में है. ये दिया हुआ, दोनों ध्यान रखना. एक गैसेस है, दूसरा वाटर की फॉर्म. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, opaque and the translucent materials. Answer है materials through which we can see clearly are called transparent materials. Those materials through which we cannot see are called opaque, and those materials through which we can partially see are called translucent materials. Example है transparent, water and glass. So translucent प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गया और
lightly wet with oil. और ओपेक में क्या हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया और बॉल है, सारे इसमें इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सबको छांट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Why is a glass full of milk heavier than an empty glass? So milk is a liquid. It has some volume which added to the weight of the glass. Hence, a glass full of milk is heavier than an empty glass. तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट द एयर इज अ मेटल। तो ये आपने एक ये बिम ले लिया, बिम पर एक में फुटबॉल ले लिया और एक में प्लास्टिक के बैग लिया, इसमें थोड़ा कम ज्यादा करके हम देख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। Answer: to show that air is a bender. A football with bladder is taken and air is filled in the bladder by means of air pump. The bladder expands, which shows that the air occupies space. Now the opening of the इसको बैलेंस में रख दिया है, यहाँ पे फुटबॉल रखा गया है और प्लास्टिक बैग्स है। यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। तो सिचुएशन आफ्टर एयर इज रिमूव, जब हमने एयर इसमें से रिमूव कर दी तब नाप करके देखा, पहले तो बैलेंस थे लेकिन जैसे एयर रिमूव गई तो ये आपका लाइट वेट हो गया और ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या है, द ब्लैडर इज क्लोज्ड, द इन्फेक्टेड फुटबॉल इज देन सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द sensitive balance and a plastic bag is suspended from the other end. Some sand is filled into the bag to make the balance horizon. Now the air from the football is released. As a result, the beam still shows that the plastic bag. This shows that the mass of the football has decreases as their inside has been released. It proves that air is a matter. What is a transparent matter? Give experimental evidence. Answer: take a vessel, put some water in it, then put one coin inside it. Coin is clearly visible, thus it proves that the water is a transparent matter. Now, explain why all electrical wires are covered with a plastic material. Plastic material से क्यों covered होते हैं, उसका आंसर देना है। All electrical wires are covered with plastic material because plastic wire is a bad conductor of heat and current cannot pass through it. Now, a gaseous of steel with hot tea is difficult to hold as compared to bone china cup. Why? Answer है, steel is a good conductor of the heat and the bone china is a bad conductor of heat. For that reason, as a glass of steel with two tea is difficult to hold, whereas bone china cup can be easily held. ये इतना आपको लिखना है। Number 6. Handles of the cooking utensils are made of wood or plastic. Why? So plastic or wood are the bad conductor of heat, and due to constant heating while cooking the food, the handle of the utensils will also get heated up. So handles are made of wood or plastic so that they do not get heated up so on, as they are bad conductor of electricity. Pure water is a bad conductor of electricity.
while salty water is a good conductor of electricity. Explain why. ये क्यों है ऐसा बताना है, तो आंसर है so pure water is a bad conductor of electricity. It is known because it does not dissociate into ions, but salty water contains sodium chloride which dissociate into ions or electricity is passed. Thus, salt water is a good conductor of electricity. Now name the three states of a matter. So answer है solid, liquid and gaseous. Second है what is the process called which changes vapor to liquid. So the process of changing vapor to liquid is called condensation. Third, in which state of matter does water change that become in freezing point? When water changes to solid, this process is called freezing of water. What is the evaporation? How can we increase the rate of evaporation? So you can write the answer. Conversion of water into steam is called evaporation. Temperature increase in the rate of evaporation. Write two elements found in gaseous state. So you can write oxygen and nitrogen. Next question, which object can float on water? So the object which are lighter than the water and float on water. Example है wood है, kerosene oil etc. Next question, differentiate between miscible and immiscible materials. So those materials which gets dissolved in water are called miscible, and while those which cannot be dissolved are called immiscible materials. For example, miscible materials salt, sugar, and for immiscible material that is the sand and oil. So differentiate between the solid, liquid and gases. So which is the given है solid है state, ये liquid state है और ये gaseous state है. तो इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत नियर होते हैं. सॉलिड स्टेट में बहुत नियर होते हैं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाते हैं. लिक्विड में और गैसेस में पूरे दूर हो जाते हैं. So difference between the solid, liquid and gases. So you can write here solid है, liquid है and gaseous state. पहले solid देख लेते हैं. फर्स्ट नंबर है solid are closely packed. ये close packed है और यहाँ liquid are loosely packed. अब यहाँ क्या गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड. तो नेक्स्ट देखिए क्या है. सेकंड, इट हैज डेफिनेट शेप. इसके बाद डेफिनेट शेप है. इट हैज नो डेफिनेट शेप. नाउ नेक्स्ट वन थर्ड, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या है, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. कौन सा, लिक्विड है. और इसमें देखिए क्या है, it has no definite shape
इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों सेम भी सही नहीं होगी और वॉल्यूम भी इसका सेम नहीं होगा। In comparison to solid and liquid, why is it easier to support gaseous? So gaseous molecules are far apart from each other. Hence, they can be brought closer by suspension. Next question, liquid do not have a definite shape. Why? Answer, in liquid molecules are lesser closer as compared to solids. So liquid molecules are free to move. Hence, they can change their shape and size. Next question है, what is boiling point? So write down the boiling point of water. So answer is here, the temperature at which water boils called boiling points. The boiling points of water is 100 degrees. आपको हमेशा याद रखना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 100 डिग्री सी, ये लर्न करके रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राइट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन द फॉलोइंग गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द टेबल। सो यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट इज हियर एन ऑब्जेक्ट मेड बाय और एफिनिटी मैग्नेट। क्या है इसका इफेक्ट पड़ता देखते हैं। सबसे पहले आयरन नेल्स है, तो आयरन है ये ऑब्जेक्ट, इसमें अट्रैक्टेड है, ये अट्रैक्ट कर लेगा। नंबर सेकंड है वुडन पीसेस, वुड है तो ये नॉट अट्रैक्ट करेगा। थर्ड है आपका प्लास्टिक बटन, ये प्लास्टिक है, नॉट अट्रैक्टेड। और फोर्थ है ऑलपिन, ऑलपिन क्या है, आयरन है और ये अट्रैक्टेड कर देगा यहाँ पे। इतना आपको करना है बिल्कुल सही सही और ये हो जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है कंप्लीट द गिवन टेबल, गिवन टेबल कंप्लीट करना है। सो यू कैन do very well. Empty glass, yes. Proper shape and improper, ये अपने आप कर लेंगे। नंबर सेकंड जो है ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो इसमें प्रॉपर शेप होगी इसकी। ना स्टोन है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बट इम्प्रॉपर शेप है इसकी। और नंबर 4 क्या, वाइल्ड पेपर विद ऑयल, ये आपका क्या होगा, लास्ट वाला होगा ओपेक करके। चलिए कर लेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, पहले नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट मेड बाय, तो यहाँ सोडा वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेन है आपका, पेन में क्या क्या बनता है बताया, यहाँ पे प्लास्टिक है, मेटल है, इंक है और कार्बन है और चेन है और बटन है। सबको मिक्स करके जला देते हैं, तो जो रेसिपी बचता है उसको देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। थर्ड है बैग, बैग का मतलब कहाँ जाएगा, बैग में बुक्स है, पेपर है, इंक है, कार्डबोर्ड है और ये लास्ट है बैलून। बैलून में क्या कहना है, बलून है, एयर है और थ्रेड है। ये बताया गया है आपको, मटेरियल बताया गया क्या क्या है इसके अंदर। नाउ कम टू द हैंड, नेम द सब्सटेंस यूज्ड फॉर इम्प्रेशन of object given in the table and derive the object on the basis of their state। चलो देख लेते हैं क्या है ये। फर्स्ट है ये सॉल्ट है, शुगर है तो वाटर में है ये और कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकंड है आपका प्लास्टिक है, मेटल, रियल है मेटल और इसमें क्या है, इंक में होगा इसका और कहीं नहीं। नाउ थर्ड है क्लोथ, चेन और बटन में है, तो ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी कुछ नहीं रहेगा। फिर फोर्थ है पेपर, कार्ड बोर्ड, ये क्या है यार, लिंक है इसके पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे। और नंबर 5 है बैलून, थ्रेड, तो ये क्या है यहाँ पर, एयर में। नाउ डिसॉल्व द गिवन ऑब्जेक्ट इन वाटर एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल दी हुई है तो क्या है, इधर नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, डिसॉल्व हो रहा है नहीं। शुगर डिसॉल्व हो रहा है ये, और सैंड डू नॉट डिसॉल्व, उसके बाद सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, चॉक जो है ये भी डिसॉल्व हो जाएगी, मिल्क है ये भी आपका डिसॉल्व हो जाएगा और केरोसिन ऑयल जो है नॉट डिसॉल्व हो जाएगा और लेमन जूस ये डिसॉल्व हो जाएगा और क्या है ये कोकोनट ऑयल है ये
नॉट डिजॉल्व होगा। इस तरह से ये लेसन आपका फिनिश हो रहा है बच्चों। नीचे आपको जो है एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे पत्थर मारो, झाड़ू मारो, कुछ हथौड़ा मारो, फेंक के मारो, लेकिन इतना मारो इसको कि ये बेचारा एम में बदल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसमें कमेंट जरूर करिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।